Hello, everyone. Good afternoon. Can you see and hear me? Good af- Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Hindu editorial of the 10th of April, brought to you by Vaishnavi. मैम आ गई हैं निशिता एंड मैम क्लास लेंगी. Good afternoon, Ishant. Hi. Hello, everyone. All of you can see and hear me. सबको मैं दिखाई दे रही हूँ और सुनाई दे रही हूँ. Hi Abhay, good afternoon. ओके तो चलते हैं. आज मंडे है और आज हमारा इस वीक का पहला एडिटोरियल है. डोंट फॉरगेट कि आपके शेड्यूल आ गई है आपके टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल पे. आपके आज की शेड्यूल आ गई है. नाउ ऑल दीज एडिटोरियल का भी क्विज होगा स्पेशल सेशन में. दैट विल हैपन, दैट इज द नेक्स्ट सेशन दैट इज हैपनिंग टुमारो. तो पूरे पहले हफ्ते का हम एडिटोरियल का क्विज देखेंगे क्योंकि हमने मार्च का कंप्लीट कर लिया था. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज. आज रिवाइज कर लेना एक बार. जस्ट गो थ्रू फ्रॉम द 1st of April हमने जितने भी सेशंस किए, एक बार जस्ट गो थ्रू इट. शिवानी, आपका प्लस क्लास क्लैश कर गया था. आई विल टेल यू द कि कब होने वाला है. आज आई विल डिस्कस इट एंड आई विल लेट यू नो शिवानी. ओके, लेट मी हैव अ वर्ड. उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ. टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगी आपका क्लास कब होगा. ओके. हाय अनुष्का. Oh, thank you. Good afternoon. Yes, Ishant, bring it on. क्या है आपका क्वेश्चन? सो जब तक ईशांत क्वेश्चन पूछता है, ये मैं हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. सो इफ यू आर नॉट, इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो प्लीज मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी पे पता चलेगा आपको मेरी क्लासेस कब हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा. अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप बस सिंपली टाइप वैष्णवी पांडे 3131, so you will be able to find my channel. Okay, now let's start. ठीक है शांत, I will wait for your question. टाइम ऑफ इंडिया ठीक नहीं है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है जयांशी की कोई पेपर खराब है या सही है. इट इज जस्ट अबाउट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर में, मेजोरिटी ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस सब कहाँ से आते हैं? द हिंदू से आते हैं या इंडियन एक्सप्रेस से. ओके, सो दैट्स व्हाई वी, और ज्यादा से ज्यादा क्लैट के लिए रेलिवेंट यही दो न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू बीइंग द मोस्ट रेलेवेंट. तो इसीलिए हम बाकी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है. ठीक है, आपकी अंग्रेजी उसमें भी सही होगी, इसमें भी सही होगी. ठीक है, इट्स जस्ट रेलेवेंट. आई एम joining for the first time. How can I complete the backlog? हनाया, आप क्या कर सकते हो कि आप पहले के वीडियोस, वट एवर वीडियोज दैट आई हैव पोस्टेड फ्रॉम मार्च, सो मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, सो यू कैन स्टार्ट बाय वाचिंग मार्च का मंडे टू फ्राइडे एडिटोरियल्स, एंड देन यू कैन, you don't have to watch all of them but majority of them, and you can, that's how you can clear your backlog. ठीक है, और ऐसा कोई बैकलॉग नहीं है. दिस इज अ डेली सेशन, सो एवरी डे there's new words, sometimes repeated words, but I still take those words. ठीक है.
अल्पेश, इफ यू डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, आई विल गिव यू अ टिप, ओके, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव अ कॉन्वर्सेशन. इट इज नेसेसरी. जब मैं जर्मन सीख रही थी तो इट वाज, आई यूज टू सराउंड माई सेल्फ विथ डॉइच. ठीक है, तो मैं चीजें अगर सुन रही हूँ तो मैं बस जर्मन में सुनूंगी, मैं अगर कुछ देख रही हूँ तो मैं जर्मन में देखूंगी. इवन व्हेन आई एम स्ट्रगलिंग आई विल स्टिल मेक श्योर कि आई एम वाचिंग इट इन जर्मन. एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इट लाइक 1 hour. आप प्रैक्टिसिंग सेशन आप किसी के साथ कर सकते हो, या फाइंड अ फ्रेंड हु इज willing to have a discussion or talk to you, because CLAT के बहुत सारे ऐसे aspirants होंगे who would be willing to have a conversation in English and discuss a topic, okay, discuss any topic. You will see how well you are able to express yourself in that. ठीक है, या अगर कोई भी नहीं मिल रहा, you can stand in front of the mirror, take up a topic and you can start discussing the topic. Okay, so anticipate, be the second person as well जिससे आप बातें कर रहे हो वो भी आप ही बन जाओ, so that way you can. I am not going to give you any of my Telegram channel link now. Alpesh, आप कब से आ रहे हो? आप अभी तक नहीं join किए हो? That is a shame. I thought you had already joined. मैम, मेरे विलेज में हिंदुस्तान टाइम्स आया है क्लाट के लिए, या न्यूज़पेपर ठीक है मैम? क्लैट के लिए तो आई वुड सजेस्ट द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं अगर आपके जहां आप रह रहे हो वहां पर अगर आपको ये न्यूज़पेपर नहीं अवेलेबल है, जैसे मैं सॉफ्ट कॉपी लेती हूँ, आई ऑल्सो टेक सॉफ्ट कॉपी, तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो. आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो द हिंदू का. टेलीग्राम पे भी यू गेट द न्यूज़पेपर का एक चैनल है जिसमें यू विल जस्ट गेट शॉर्ट क्लिप्स और सारे क्लिप्स मिल जाते हैं, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो. आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो ऑफलाइन इज, अब हमारे पास ऑनलाइन का ऑप्शन है, सो ऑफलाइन अगर नहीं मिल रहा है कोई चीज तो ऑनलाइन डेफिनेटली मिल जाएगी. ठीक है अनुष्का, एनी लैंग्वेज, लर्निंग एनी लैंग्वेज इज, इट इज एन एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन. बहुत अच्छा होता है. तो I've always been someone who learns new languages and I think everyone should do that. Okay, it exercises your brain muscles. ठीक है, तो I've still not completed it though, but ठीक है. मैंने शुरू तो किया था. Okay. ओके, सबसे पहला वर्ड है हमारा आज का. वर्ड शुरू करते हैं. वोकैबुलरी स्टार्ट्स विथ ड्रकोनियन. नाउ रिमेंबर सेंटेंसेस. ओके, ड्रकोनियन हमने पहले भी कर लिया है. ओके, दिस वर्ड इज अ रेपिटेशन. अगर हम लॉ की बात करें और या लॉ की एप्लीकेशन की बात करें, तो कोई भी चीज अगर ड्रकोनियन कहला रही है तो उसका मतलब वो बहुत ही सख्त है, राइट? एक्सेसिवली हार्श या सिवियर. ठीक है, समथिंग दैट इज एक्सट्रीम, है ना? तो दैट इज ड्रकोनियन. ड्रकोनियन प्रिंसिपल, ड्रकोनियन लॉ इज ऑल कन्वेंशनल. पुराने टाइम का लॉ या पुराने टाइम के की सोच या ओपिनियन रखना. एंड दैट टू ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज सपोज टू बी हार्श या बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, है ना? ओके, अमेंडमेंट. अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट इज अ नाउन. यहाँ पर ड्रकोनियन इज एन एडजेक्टिव, इसलिए इसके बाद हम लगाते हैं लॉ, प्रिंसिपल, व्हाटएवर. अमेंडमेंट इज द नाउन. सो कोई भी छोटी मोटी चेंजेस या एडिशन अगर करते हैं किसी भी डिजाइन में, ताकि वो इम्प्रूव हो जाए या पीस ऑफ लेजिस्लेशन इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अमेंड करते हैं. ठीक है, अमेंडमेंट इज द नेम. तो नाम है इसलिए अमेंडमेंट हो गया. अगर अगर हमें इसे वर्ब की तरह यूज करना है तो अमेंड, राइट? Intermediary. Intermediary is again a noun, which is a person who acts as a link between people in order to try and bring about an agreement. A mediator. उसको mediator भी कह सकते हैं. Intermediary कौन हो गया? जो दो लोगों के बीच में एक लिंक बनाता है. बेसिकली दो लोगों के बीच में agreement या जो दो लोगों के बीच में
डिस्कशन कराता है, दो लोगों के बीच को पास लाके उनके अग्रीमेंट्स बनाता है। बेसिकली अ पर्सन हु इज द मिडिल मैन, ठीक है, दो लोगों के बीच में जो राय विमर्श और सहमति और ये सब होता है वो जो करता है वो उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। ओके, आई एम ट्राइंग। ओके, सो इंटरमीडियरी इज अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल इन ऑर्डर टू ट्राई एंड ब्रिंग अबाउट एन अग्रीमेंट, एक समझौते पे आ जाए, इसीलिए दो लोगों को लाता है और उन दोनों के बीच में लिंक बनाता है। ठीक है, सो we can also call an intermediary a mediator. Okay. Hello Priyanshi, I have been good, thank you for asking. Mm-hmm. Okay, how nice of you, Alpesh. So you are creating a group so that you can add all of them and then bring them to my channel. If you are planning to do that, बहुत ही शानदार plan है, Alpesh. That would help you, me, everyone. But the plan is to take my students away to your group, then मत करना ये, ठीक है? Okay. So bring them all together, Alpesh, and then send them off to my channel. Okay. So draconian measures won't be necessary if we accept that the current limits to end the crisis. Very nice, Ayushi. Good job. You always make brilliant sentences. This reaction needs to add intermediary. This reaction needs to be added as an intermediary. ठीक है? As added as an intermediary. Radhika has draconian rules at her home regarding the kinds of clothes she should wear in the name of decency. Wow, Anushka. Good job. Very nice. Good sentence. Good job. And what are the boys doing? Boys are being just boys, huh? Why aren't except Ishant, rest of you are completely distracted. Completely. Alpesh, आज क्या कर रहे हो? And where is Triranga? Triranga hasn't joined yet. Nancy hasn't joined. Shivani has joined. Shivani, make sentences. कहाँ चले गए आप? Nishita, Shivani, all of you, why aren't you making sentences? An amendment was passed by the Supreme Court. Very nice, Simran. Hello, Neha. I will act as an intermediary to meet my friends with her friend. Okay, very nice, Abhay. Okay, I will act as an intermediary between two people. ठीक है, very nice, Abhay. Draconian नहीं, ड्रकोनियन प्रिंसिपल्स भी हो सकता है, इस केस में हम लॉ के लिए यूज कर रहे हैं, बट इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट इज वेरी कन्वेंशनल, ठीक है, कोई भी चीज बहुत ही पुराने जमाने के थॉट के साथ और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है, विथ स्ट्रिक्टनेस आती है पुराने जमाने के थॉट के साथ, सो दैट इज कॉल्ड ड्रकोनियन। तो आप किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लॉ के लिए, बट हियर इट मीन्स एक्सेसिवली हार्श और सिवियर। ठीक है, an amendment to civil code. Okay, we need to pass an Nishita, an amendment regarding same law. Very nice. Okay, or some law that is स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 7-8 मंथ्स है, वोकैब वगैरह का डर है, इनफैक्ट हर चीज का डर है लग रहा है। जयांशी, डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास 7-8 महीने बहुत होते हैं प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए डर लग रहा है तो यू कैन स्टार्ट अटेंडिंग दीज क्लासेस रेगुलरली, आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, आई वुड से। और बाकी इंग्लिश के लिए अगर इफ यू वांट टू वॉच माय सेशंस, यू कैन वॉच स्पेशल सेशंस एज वेल। ठीक है, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यू कैन इनरोल इन अन अकेडमी प्रोग्राम, अभी बहुत सारी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट।
इतना टेंशन नहीं लेना है. um I caught my breath and I asked an intermediate question. Will you marry me? Okay. I caught my breath and asked an intermediate question. Okay. So you are changing it to intermediate question. Will you marry me? Okay, Ayushi. How romantic. Very nice. Some law should be draconian to stop severe crimes. Very nice, Abhay. The couple were really ensconced in intermediary sears at the head table. Very nice. Um, USA-Iran conflict needs intermediary or they will use draconian moves against each other. Absolutely brilliant. अल्पेश आप जब sentences बनाते हो तो मजा आता है. So keep making sentences. Anushka, a few amendments were made by my teacher in the speech that was to be delivered in the morning assembly. Very nice, Anushka. Good job. Simple application. Very nice. एडवेंट का मतलब क्या होता है? द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और थिंग. कोई भी चीज जो नोटेबल है, ठीक है, कोई बड़ा नाम है या ह्यूज थिंग इज दैट यू आर एंटिसिपेटिंग, कि आप सोच रहे हो कि आने वाला है, उसका जो अराइवल होता है उसको एडवेंट कहते हैं. द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन्स, द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, द एडवेंट ऑफ व्हील्स, all this is advent. Okay, unfettered का मतलब क्या होता है? And unfettered is an adjective. Advent noun है, by the way. Unfettered is an adjective जिसका मतलब होता है unrestrained और uninhibited. Unfettered भी हमने पहले किया है. मतलब कोई भी चीज जिसमें कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो कोई हर्डल्स नहीं आ रही है, कोई बैरिकेड्स नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है रास्ते में, एकदम स्मूथ फ्लोइंग रास्ता इज अनफेटर्ड. ओके, समथिंग दैट इज नॉट हिंडर्ड, समथिंग दैट इज नॉट obstructed इज अनफेटर्ड. ठीक है, तो एडजेक्टिव जैसा यूज करना. रिमेंबर, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रोटेस्क. ग्रोटेस्क का मतलब होता है कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड. ओके, मैलफॉर्म्ड या डिफॉर्म्ड भी यूज कर सकते हैं ग्रोटेस्क के लिए. सो समथिंग दैट इज बहुत ही कोई ऐसी चीज जो देख के यू फील, जिसको देख के यू फील घिन आती है, और बेसिकली कोई बहुत ही बदसूरत सी चीज जिसको देख के तुरंत यू आर लाइक, ओके, सो दैट इज ग्रोटेस्क. ओके, and then you have entity. Entity is a noun जिसका मतलब होता है a thing with distinct and independent existence. Entity जहां भी आपको दिखेगा आप उसको organization समझ लो. So that is the meaning of entity. ठीक है, organization. कोई भी एक independent बॉडी या डिस्टिंक्ट या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसी चीज का है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस किसी चीज का है, वो एक एंटिटी है. ओके, Okay, run afoul is a phrasal verb. Run afoul, okay, which means to get into trouble. Okay, to get into trouble because of not obeying or following the law or a rule, etc. So basically, run afoul is आप किसी परेशानी में फंस जाते हो. क्यों फंस जाते हो आप उस परेशानी में? क्योंकि आपने रूल नहीं फॉलो किया या लॉ नहीं फॉलो किया, तो अब आप ट्रबल में हो. ओके, सो ही इज रनिंग अफाउल as he took um took a huge amount, or as he robbed a bank. Okay, so he's running afoul because he robbed a bank. Okay, so basically अगर कोई ऐसी चीज करता है जिसके वजह से वो परेशानी में आ सकता है. क्योंकि वो उसने या तो कोई रूल नहीं फॉलो किया या लॉ नहीं फॉलो किया. इट इज अ फ्रेजल वर्ब. ओके, सो फ्रेजल वर्ब, that means you're supposed to, it is a phrase, so you're supposed to use it like a phrase. Okay, run afoul. All right,
सो हमने देखा ड्रकोनियन अमेंडमेंट, इंटरमीडियरी एडवेंट, unfettered, grotesque entity, and run afoul in this page. Okay, let's see. Mhm. China is Chandan has Hi Chandan. China is acting like a mediator between Saudi and Iran. Mediator तो हमने नहीं किया है, but okay, instead of intermediary आप mediator use कर रहे हैं, ठीक है, very nice, चंदन. As long as it is a difficult word, आप उसको practice कर रहे हो तो ठीक है. Intermediary is dangerous in our society, so be careful and don't rely on him. Okay, an intermediary is dangerous in our society, so be careful and don't rely upon rely upon him. Okay, अमेंडमेंट इन लॉ. शिवानी, डॉट्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है. आपको जहां भी लगता है कि पॉज होना चाहिए वहां कॉमा दे दो, ठीक है. सो यहाँ पर इंटरमीडियरी, an intermediary is dangerous या intermediaries are dangerous, दोनों यूज कर सकते हैं, कॉमा, sorry, dangerous in our society, comma, so be careful and don't rely upon him. Amendment in law is necessary sometimes because the moral value and social value of society is changing with time. Very nice, Abhay. Good job. Okay, Ayushi, ma'am, you are always so deliberate, hardly surprised by the most outlandish events. Wow. Yeah, nothing really graces me. I'm like Ellen DeGeneres for some reason. बहुत कम डरती हूँ, but I do get scared or shocked. Thank you for the sentence. I really like it, Ayushi. हाँ, तो जिनको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो it is added in the blue strip, so you can join through this. Work as an intermediate between judge and people. Advocates, okay? S आएगा यहाँ निशिता. Very good sentence. Advocates work as an intermediate between judge and people. In combination with the advent of the euro as a common currency has created, okay, in in the in combination with the advent of euro as a common currency has created a single economic zone. When you're saying Priyanshi in combination, तो यहाँ पर दो चीज का combination होना चाहिए ना, with the advent of euro and something else, right? So that would be a combination. Instead of that, remove the in the combination. So the advent of euro, यहाँ से शुरू होना चाहिए sentence. The advent of euro as common currency has created a single economic zone out of region once divided by an iron curtain. Are you sure this is your sentence, Priyanshi? Because I want your sentences. ठीक है, अपना sentences. I feel unfettered happiness for Alpesh without a touch of envy. Wah wah, Ayushi. See, such a nice person Ayushi is. um, because of you, now my CUET preparation is unfettered. I'm so happy, Nishita. Glad to know. In our changing society, amendment is necessary with time, so we regulate it uniformly and with equality. Very nice. Shivani, you're on fire. Advent of Shah Rukh Khan made people enthusiastic. Very nice. AW Money. Uh, though grieving, she made a grotesque attempt at a smile. Very nice, Priyanshi. So I'm imagining how her smile would look like. So she must be like really. Okay, sorry. Now US. Now us CLAT prep.
is unfettered because you are with us. Now our CLAT preparation is unfettered because you are with us. Very nice, Chandan. Thank you. My two companies will combine to form a new entity. Mm, Entity. Very nice. Triranga, hi, welcome. Hanaya, the advent of UK PM to India was eye-catching. Very nice. Good job. He ran afoul of the law. Very nice, Priyanshi. Good job. Advent of my favorite educator means a lot for me in life. Okay. Advent of my favorite educator means a lot for me in my life, Shivani. I hope that is for me. Okay. Anyway. Um. अल्पेश और त्रिरंगा आग लगा रहे हैं. अनुष्का, the advent of Instagram has hindered the preparation of CLAT aspirants, which would otherwise have been almost unfettered. Very nice, Anushka. क्या sentence बनाया. Good job. Deserves a standing ovation. Her love story was too grotesque to believe. Very nice, Triranga. Good job. Enforcement of the law that governs supernatural entities living in the known world. Very nice. Ayushi, my house gallery show unfettered view of the surrounding. Very nice. Ishant, very nice. Good job. Medicines are absolutely grotesque because I don't like to take medicines. That cannot be the reason for anything being grotesque just because you don't like it. Look it, ठीक है. In this case, I will give it to you. Chandan, ठीक है. Very nice. Um, Hanaya, it's because of internet my studies are unfettered. Very nice, Hanaya. He isn't he isn't using a helmet while driving, so he ran afoul. Okay, he didn't wear a helmet while driving, so he ran afoul. Okay, it's difficult to find run afoul in a sentence. Very nice. Good job. Good sentence, Triranga. Very smart. The sight of a dead profusely the sight of a dead man or dead person or dead body profusely bleeding. Uh, okay, dead profusely bleeding cat to the Badrinath journey was grotesque to encounter. Wow, Anushka, my God. The advent of 5 gram will 5G, sorry. It's a small G, so Chandan, I thought it is 5 gram. But ठीक है. The advent of 5G will be helping us a lot, and it will make our lives easier. Okay, lives plural, life singular, plural इसका क्या होता है? Lives. Okay, same for wife, wives, knife, knives. Okay, all these are IVs. Okay, that was the purpose. Um, I discovered dangerous secrets and ran afoul of the tyrant guy. Very nice, Ayushi. Good job. The advent of that person is unfettered initially, but after a while he ran afoul. Okay, he ran afoul because of public in large number. Okay, abhay ran afoul. I discovered dangerous secrets. ये मैंने पढ़ लिया. Ulfi fashion sense is grotesque according to some people, but this is a run afoul because in India we have right to life with dignity. Um, this is run afoul. Okay, okay, Nishita. I read it in a good attempt, Nishita. You try to combine two things. But running afoul would not be suitable over here. लेकिन ठीक है, sentence ठीक है. I read it in a novel, The World is Flat by me, Thomas Friedman. So I just remember. Okay. Area 59 found new
alien species which look grotesque or have human appearance. Very nice, Ishant. He thought less of himself by assuming himself a grotesque entity in society. Grotesque is natural. लास्ट टू वर्ड्स एंटिटी है. एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, अ थिंग विथ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका एक डिस्टिंक्ट, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. ठीक है, कोई भी चीज जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ रहती है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी. रन अफाउल इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ नॉट ओबेइंग और फॉलोइंग. कोई भी चीज अगर ओबे नहीं कर रहे हो और फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो. जैसे आप हेलमेट नहीं पहने हो और आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है, तो यू basically ran afoul, okay, and you got caught for it. Okay, so that is run afoul. Now moving on to the next set of words. Misleading. Misleading is a very common word, बहुत ही common high frequency word है जो एक adjective है which basically means giving the wrong idea or impression. कोई भी चीज misleading जब कहते हैं तो मतलब वो गलत impression दे रहा है, गलत idea दे रहा है किसी चीज के बारे में. ठीक है, तो हम उसको डिसेप्टिव भी कह सकते हैं. कंफ्यूजिंग इज अ फार ऑफ सिनोनिम, मतलब बहुत ही पास का सिनोनिम नहीं है, थोड़ा सा दूर का सिनोनिम है. ओके, सो डिसेप्टिव वुड बी द करेक्ट वर्ड फॉर इट. ओके, मिसलीडिंग. एलुसिडेट, अनदर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, बहुत ज्यादा देखोगे. My grandma told me that he burns bidi. My grandpa told me that he burns bidi with unknown entity. Yeah, I remember grandfathers used to tell these stories about sharing tobacco with ghosts and other entities, right? So I can relate to that, Ishant. I have also heard those stories. Every person is a different entity, although everyone is dependent on each other. Very nice, Abhay. Good job. My preparation becomes unfettered when I discuss my problem with educators. Very nice, Shivani. Triranga, you have been searching for sentences like that, so that's why respect. Hence respect. But okay, the Constitution is supreme entity. Very nice, Hanaya. Good sentence. Simple and sweet. Never say that to your wife. Never say that your wife is grotesque. Otherwise, you have to say, "Hey to God." Okay, Nishita, good job. Never say that to anyone if you don't want to be near to God. I think you shouldn't call anyone grotesque. Um, if a government falls, advent of law is highly needed. If failed, unfettered people will make city grotesque in no time. If a government falls, advent of law is highly needed. If failed, okay, if failed, comma, unfettered people will make city grotesque in no time. Very nice, Alpesh. Punctuation थोड़ा सा इधर उधर तो इसीलिए that's why I couldn't understand, but ठीक है. Unacademy as an entity is hugely becoming popular among aspirants because of its highly talented teachers. Good job, Anushka. आप मुझे आज बहुत खुश कर रहे हो. Okay, and so is Shivani. Alpesh is going rogue today, and so is Triranga. Uh, Shivani, I have entity on off my phone, so I never give it to anyone. शिवानी वर्क, दैट इज नॉट द करेक्ट यूजेज. यहाँ देखो एंटिटी क्या है, एंटिटी नाउन है. ठीक है, सो आई हैव, व्हेन यू से आई हैव एंटिटी of my phone, that means you are talking about you have possession. ठीक है, so I have possession of my phone. ठीक है. I kept aloof, I waited, fantasized, misleading myself. Very nice, Ayushi. Wow, you can write, you can really write. uh well, एक बात याद रखना, don't judge my appearances.
can be misleading, and then a dab. Vatranga, what role are you playing today? Sometimes blood relation questions are misleading. Yes. Good job, Nishita. Simple and sweet. When people ask me a way of going somewhere, I am always misleading them and they get in wrong directions. This makes me okay. So Shivani, when people ask me um the way, I mislead them, and this is funny to me. Okay, and this is funny to me, or this is fun for me, and this is fun for me. Okay, simple. इतना ज्यादा explain नहीं करना है, ठीक है? It will be helpful to elucidate this idea by an analogy from the province of mechanics. Very nice, Ayushi. My God, who are you? The title of this article is quite misleading. Very nice. The news channel are sometimes misleading. They do not elucidate the news completely. Very nice. So we have done the word elucidate and misleading. Just misleading का मतलब हो गया giving the wrong idea or impression, deceptive या confusing. Elucidate is make something clear and explain. ठीक है, कोई भी चीज को अच्छे से explain करना is to elucidate something. ठीक है, basically आप इसको use कर सकते हैं, जहां भी elucidate used है वहां पर आप explain use कर सकते हैं. Okay, so the teacher elucidated the problem to the students, or the teacher elucidated the concepts to the student. Okay, बाईपास करना मतलब गो पास्ट या अराउंड और राउंड. ठीक है, कोई चीज को क्रॉस नहीं करना, उसको डॉज करके चले जाना इस बाईपास करना. ठीक है, कोई चीज को डॉज करके चले जाना या उससे उसको क्रॉस ही नहीं करना इस बाईपास. ओके, contesting and contest is also verb. यहाँ line से verb है सारे. Elucidate is a verb, bypass is verb, which means bypassed भी कर सकते हो. Contest is verb, contesting भी कर सकते हो, contesting this election. Okay, so contesting का मतलब क्या होता है? Engage in competition to attain a position of power. ठीक है, कोई भी competition में engage करना, क्यों? ताकि आप पावर हासिल कर सके. ठीक है, कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ताकि आपको, व्हाट आर यू कंपीटिंग फॉर? यू आर कंपीटिंग फॉर पावर. ठीक है, आपका कंपटीशन क्या है? कि आपको पावर हासिल हो जाए. और एक मीनिंग होता है इसका अपोज. ठीक है, कंटेस्ट इज टू अपोज समथिंग, एन एक्शन और थ्योरी एज मिस्टेकन और रॉन्ग. ओके, कोई भी चीज को अपोज करना कि ये सही नहीं है, ये गलत है. ओके, आपको गलत पता है, दैट इज ऑल्सो टू कंटेस्ट समथिंग. ओके, एंड बोथ आर वर्ब्स. नेक्स्ट इज स्क्रूटनी. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. स्क्रूटनाइज करना is something that we will hear a lot. Scrutiny is noun. किसी चीज को scrutinize करना, okay, is basically किसी चीज को critically observe करना, किसी चीज को examine करना, किसी चीज को inspect करना, कोई चीज को बहुत बारीकी से उस पे ध्यान देना, उसकी क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं. ऑल दीज थिंग्स व्हेन समवन इज लुकिंग एट, तो कोई भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं कि वो कैसे एक्ट करता है, इज बेसिकली यू आर स्क्रूटनाइजिंग दैट पर्सन या दैट एक्टिविटी या दैट थिंग. ठीक है, स्क्रूटनी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर. सेलिएंट. सेलिएंट इज नॉट साइलेंट. ठीक है, सेलिएंट इसको बोलते हैं, इट इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है किसी चीज का भी जो मोस्ट नोटिसेबल या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, दैट इज कॉल्ड इट सेलिएंट फीचर. ठीक है, कोई भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट या नोटिसेबल फीचर. ओके, मोस्ट नोटिसेबल या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है, या कोई भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, दैट इज कॉल्ड इट सेलिएंट फीचर. सो सेलिएंट पॉइंट्स इन हिज डिस्कशन. सेलिएंट पॉइंट्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, अब आर्बिटर हमने बहुत तरीके से देख लिया, आर्बिट्रेटर देख लिया है, आर्बिट्रेट करना देख लिया. आर्बिटर क्या होता है? इट इज अ नाउन विच इज अ पर्सन who
settles a dispute or has ultimate authority in a matter. Okay, a person who settles a dispute or has ultimate authority in a matter, उसको adjudicator भी बोलते हैं. ठीक है, arbiter is basically दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट जो भी होता है वो उसको सेटल जो करता है उसको कहते हैं आर्बिटर. ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में कोई भी तरह का डिस्प्यूट है, कोई भी तरह की अनबन है, तो जो सेटल करता है उसको उसको कहते हैं आर्बिटर. ठीक है, और उसी के पास अथॉरिटी होता है कोई चीज को सेटल करने का. ठीक है, मैटर सेटल करने का. इनको हम एडजुडिकेटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड फाइनल वर्ड इज सेंसरशिप. बहुत ही कॉमन वर्ड है सेंसर, सेंसरशिप. हम शुरुआत से देख रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड अगेन. सो सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? द सप्रेशन और प्रोहिबिशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ बुक्स, films, news, etc. that are considered obscene, politically unacceptable or a threat to security. इन सब में से कुछ भी हो तो उसको सप्रेस कर देना या प्रोहिबिट कर देना, मना कर देना. उस लेट्स से इफ इट इज सेंसरशिप ऑफ बुक, दैट मींस वो बुक नहीं आ रही आपके पास. ठीक है, वो बुक नहीं रिलीज होगी. कोई फिल्म है, फिल्म नहीं रिलीज होगी. न्यूज है, वो नहीं आएगी आपके पास. दैट आर कंसिडर्ड. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो या तो ऑब्सीन है, ठीक है, या तो पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल है, या तो थ्रेट टू सिक्योरिटी है. इन वजहों से आपके पास नहीं आएगी फिल्म, न्यूज या मूवी, film, news या books. So that is called censorship of something. Censorship of data, censorship of movie, censorship of technology. Lot of censorship हम देखते हैं हर दिन, right? So चलते हैं sentences की तरफ. All these words are done. hmm. Okay. When people ask me, ये वाला कर लिया मैंने. I had to start with उज़्माकी का भी मैंने सेंटेंस पढ़ लिया था. हनाया का भी पढ़ लिया था. Okay, निश्चिता से I have to start. Please elucidate the reason of your beauty. Okay, good sentence. Ishant, she elucidates herself princess, though she looks grotesque. She elucidates herself as a princess, okay, uh, as a princess, but she is grotesque. Okay, Ishant, please explain once again, ma'am. किस चीज का अनुष्का? Do tell me which one do you want explanation once again. They bypassed quite residential neighborhood and a shuttered local vegetable market. Very nice, Ayushi. Good job. Most people does not, space होगा अगर does not लिख रहे हो तो. Most people doesn't give, don't give. Most people के साथ doesn't नहीं होगा. Most people don't give elucidated information to mislead the public. Elucidated information, यहाँ पर ed use करेंगे आप. Okay, but the sentence is fine. अब है you have not understood. Allow me to elucidate, but first give me advance fees. Very nice, Trilanga. Good job. You're already practicing to become a lawyer. Jayanshi, I contested in a debate competition which was on inter-school level. Okay, news channel work is to give correct elucidated incident, correct elucidate of every incident, correct information of correct and elucidated description of every incident, so as to not mislead us. Okay, so as to not mislead us. Nishita, always talking with people is elucidately. This makes
communication easy and understandable. Always talk with people, talk to people in an elucidated manner. ठीक है, in an elucidated manner. This will make communication easy and understandable. Please elucidate the reason of your English. सन्यम, इसको आप ऐसे कर सकते हो. Please elucidate the reason of your something about English, right? You cannot just say English, okay? It has to be either good or bad, okay? So please elucidate the reason of your um, fluent English or of your uh, not so fluent English, okay? Sanyam, we gather stones and the contest is on. Very nice, Ayushi. The traffic really heavy on the bypass. Triranga, you used it as a noun. Very nice. सीधा सीधा sentence. ठीक है. I always try to scrutinize you so that I am able to improve my English. I always try to scrutinize you so that I am able to, not I can, I am able to improve my English. Very nice, Nishita. The person who was scrutinizing us during the practicals was the CBSE observer. Very nice, Jayanshi. He bypassed the contest by cheating, for which he was scrutinized. Very nice, Alpesh. Good job. Uh, Nowadays, law is and नहीं होगा यहाँ पर. Law is salient part of everyone's life. Law is a salient part of everyone's life. Judges scrutinize the case and then make decisions about it. This makes free and fair results. Very nice, Shivani. I elucidated my father as to why I do not want to pursue the chartered accountancy course and why I feel inclined towards the legal field. Very nice, Anushka. Good job. Jayanshi, during emergency, the censorship on press was in high practice. Very nice, Jayanshi. Hanaya, the fundamental rights are the most salient features in the constitution. Very nice. My mother said that I'm glad that you are now the arbiter uh, of all things ladylike. Very nice, Ayushi. Wow. This is this looks like a sentence from Little Women somehow. But okay. Ayushi is arbitrary when it comes to war. Very nice. Good job, Alpesh. Anushka, I was advised to be careful on the road as the cars often bypass with a rush at night. Very nice, Anushka. If you do not elucidate your own situation to a lawyer, then you will definitely go to jail. Uzmaki. Um, okay, Alpesh, good job and good observation. The strength of this class is increasing saliently. Very nice. Uh, all I need is a chance to elucidate my talent. Very nice. Swarnima, you will have that chance. Don't you worry. Anushka, aspirants all around the country are contesting with one another to get seat in the top NLUs. Very nice, Anushka. क्या sentence बनाते हो आप? Uh, we contest debates on Rahul Gandhi defamation case. We contested debates on Rahul Gandhi's defamation case. Very nice, Shivani. Good job. Leaders contesting elections is a salient feature in democracy, but people should scrutinize them before voting for them. Otherwise, they can bypass some important work and use censorship unnecessarily. Oh my god, Abhay, you are on fire. Very nice. Good sentence. I felt uncomfortable under female doctor scrutiny. And then there is Ishant making sentences like I felt uncomfortable under female doctor scrutiny. But it's a good sentence. It's a very nice sentence. Ishant, good job.
I think back it's odd. I think back it's odd. I never suspected censorship. I think it's odd. It's odd when I think back, I never suspected censorship. Okay, very nice. Ayushi, good job. An arbiter should not be biased towards one party to take a correct decision. Very nice, Abhay. Hanaya, the murder that took place during a singing contest uh, needs to be scrutinized properly. Very nice. Good job. Once a Baba opposed Alpesh's sentence and says, आगे दो द्वार पीछे दो द्वार दरवाजा खुले तो I am wasting my time, Triranga. Uh, okay. Ayushi Triranga starts by summarizing the salient points of agreement, then set out the points that are at issue. Very nice, Ayushi. Very nice. The job of arbiter is, and good observation. The job of arbiter is nice because he settles disputes between two people and make harmony in society. Very nice, Shivani. Anushka, the comprehensive scrutiny of the mock test paper is one of the salient feature of a strong CLAT prep. Very nice, Anushka. Wow. Uzmaki, contest is great way to attract people to your classes. Very nice. Anger is a gift. Okay. Okay. All right. Bypass road near the government building is it any good? Anger is a gift. How is the book, Ayushi? Bypass road near the government building is always busy. Okay, not been busy. ठीक है शिवानी. CID scrutiny the murder cases scrutinizes. Sanyam scrutinizes यहाँ पर हो जाएगा. Every time my teacher checks my paper with scrutiny. Every time my teacher checks my paper with scrutiny. Very good job, all of you. Brilliant, brilliant, brilliant. You have done really well. Now moving on to the important announcement. सबसे पहला हमारा announcement है कि बहुत बढ़िया ऑफ्स चल रहे हैं. यू हैव प्लस के लिए 9 months का सब्सक्रिप्शन जो 49,000 का होता था, इट इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 39,200 ओनली एंड यूर सेविंग 9,800. अगेन प्लस का 12 months का सब्सक्रिप्शन जो 52,000 का होता था, इट इज अवेलेबल फॉर 41,600 ओनली, सो यूर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10,400. एंड आइकॉनिक बैचेस में अगेन जो 9 months का सब्सक्रिप्शन था 84,793 था, जो has become 67,835 and you're saving up to 16,958 rupees. 12 months का subscription again 86,914, which has dropped down to 69,532 and you're saving 17,382. So now is the time to enroll yourself in batches. और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप कोड यूज कर सकते हैं VP10 to get more discounts. VP10 मेरा कोड है. So when you're using the code to subscribe, use my code VP10. The second thing is CLAT and other 5-year LLB एग्जाम के मॉक टेस्ट का कैलेंडर आ गया है. 7 अप्रैल से शुरू हो गए हैं ये मॉक. 7 अप्रैल को MHCET का फ्री मॉक था 2 बजे. 9 अप्रैल को ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप था जिसका आज हम मॉक एनालिसिस करेंगे. 11th अप्रैल को ऑल इंडिया MHCET लॉ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है 2 बजे. 15th अप्रैल को अगेन इट इज फॉर एवरीवन MHCET का मॉक टेस्ट अवेलेबल है. 16th अप्रैल को जो हो रहा है दैट इज ओनली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर प्लस स्टूडेंट्स एंड सो इज 30th अप्रैल को जो हो रहा है वो भी एक्सक्लूसिवली प्लस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. So plus students, you are supposed to give all the mocks, ठीक है? And the rest of you, make sure that you give all the mocks that are available for you. All of it, okay? एस लीगल एक बैच शुरू हुई है जो 6th अप्रैल से शुरू हुई है एंड इट इज फॉर बिगिनर्स ऑफ क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स. आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं अगर आप इस साल नहीं अगले साल प्रिपेयर कर रहे हो क्लैट देने के लिए, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं एंड माय कोड इज VP10. You can get extra 10% discount, so use my code VP10.
10। द वॉरियर्स इज द नेक्स्ट बैच, ये ड्रॉपर्स बैच है। सो सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए है। अगर आप एक ड्रॉपर हो, आप पहले से तैयारी कर रहे हो क्लैट के लिए और आपको इस साल देना है क्लैट 2024 देना है, तो आपके लिए है ये बैच जो 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अगेन, अगर आपने इनरोल नहीं किया इस बैच में और आप ड्रॉपर हो, तो प्लीज मेरा कोड यूज करना VP10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन द ऑफर। MHCET, crack MHCET in 15 days is available at a flashy price of just 999. You're saving 2000 rupees. ये scan कर सकते हो QR code and that will take you straight to the enrollment page. Enrollment page में जाके अगर आपको code use करना है तो आप कौन सा code use करोगे? हाँ, VP10 use करोगे. Okay, to subscribe. All right, so let's move on to the editorial. आज का editorial हम देखते हैं. Can we get started with the editorial? अपना newspaper, if you have a hard copy, please make sure you always open it and keep it in front of you जब भी मैं editorial करती हूँ, ताकि आपको साथ साथ में जिस लाइन से मैं पढ़ रही हूँ आपको समझ में आ जाए, even if it is not very clear on the board. ठीक है? तो draconian rules is the title of the editorial. New amendment rules on intermediary guidelines amount to censorship. तो जितने भी new okay, so this becomes the conclusion है ना कि new amendment rules on intermediary guidelines amount to censorship. अब हम देखते हैं कि बोल क्या रहा है, right? Because this is not very clear. सबसे पहले main idea क्या है और कहाँ है? With the advent of social media, the product of the evolution of internet into a sphere of communication that allows for relatively unfettered user generated content, the problem of misinformation has taken a grotesque form. अब देखो यहाँ से यहाँ तक is extra information. This is just okay. So you can straight away, आपका मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया है कि with the advent of social media, the problems of misinformation has taken a grotesque form. तो सोशल मीडिया की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत हो रही है, गलत इन्फॉर्मेशन या तो बनाई हुई इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैल रही है और बहुत गंदी तरीके से फैल रही है इन एन अगली वे. ठीक है? तो दैट इज द मेन आइडिया. इसी के बारे में बात करेंगे हम, राइट? एक्सप्रेस measures to curb misinformation called false news and the somewhat inaccurate fake news are a must. ठीक है? अगर एक्सप्रेस मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, इन चीजों के लिए, किन चीजों के लिए? फॉल्स न्यूज का स्प्रेड होने का और फेक न्यूज का स्प्रेड जो हो रहा है, इसको कर्ब करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस मेजर्स लेने चाहिए, तुरंत एक्शंस लेने चाहिए हमें फॉल्स न्यूज और फेक न्यूज को हटाने के लिए. ठीक है? however shows contradiction. This raises the question whether the union government or its division can be the regulatory entity. तो अब ये क्या क्वेश्चन इससे आता है कि यूनियन गवर्नमेंट और इट्स डिवीजन, यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के डिविजन्स क्या इस चीज को रेगुलेट करने के लिए क्या इस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं? ठीक है? ये रेगुलेट करने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं कि नहीं? यूनियन गवर्नमेंट और उनके डिफरेंट डिविजन्स को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं टू कर्ब दिस प्रॉब्लम? इन द IT Intermediary Guidelines and Digital Media Ethic Code Amendment Rules to 2023, the Union Government has added a provision of a fact check. यहाँ पर हाइफन होना चाहिए जो मिसिंग है. फैक्ट चेक यूनिट टू आइडेंटिफाई फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है कि अब IT ने एक प्रोविजन ऐड कर दिया है इन दी IT. ये जो अमेंडमेंट रूल है, इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन ऐड कर दिया है. कौन सा प्रोविजन? की फैक्ट चेक यूनिट, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेगी कि ये फेक मतलब पूरी तरह बनाई हुई न्यूज है या फॉल्स,
कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है, या मिसलीडिंग, जानबूझकर एक साइड दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऑफ अ न्यूज, तो ये चीज को फैक्ट चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक डिवीजन बना दिया है। अगेंस्ट सच content identified by this unit, intermediaries such as social media companies or net service providers will have to take actions or risk losing their safe harbor protection in section 79 of the IT Act, which allows intermediaries to avoid liabilities for what third parties post on their website। ये इस पे भी हमने एक एडिटोरियल किया था जिसमें हमने सेफ हार्बर के बारे में पढ़ा था। ये हमारा दूसरा या पहला ही एडिटोरियल था जिसमें हमने पढ़ा था सेफ हार्बर के बारे में कि आईटी कंपनीज जितनी भी ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर कोई कोई उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई गलत चीजें फैला रहा है या कोई गलत इश्यू फैला रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक फैक्ट चेक यूनिट हो गई है, अब ये फैक्ट चेक यूनिट फैक्ट चेक करेगी, ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या होगा कि इनको जो भी फैक्ट चेक करके ये जो यूनिट है जो भी एक्शंस बताएगी वो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को लेना पड़ेगा, तभी उनका सेफ हार्बर प्रोटेक्टेड रहेगा, नहीं तो ये सेफ हार्बर भी चला जाएगा। विच जिसमें क्या आता है, ये आता है सेफ हार्बर क्या है, विच अलाउज इंटरमीडियरीज टू अवॉइड लाइबिलिटीज फॉर व्हाट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन देयर वेबसाइट्स। तो आपको इंटिमिडेशन मिल रहा है, आपको पहले से सावधानी बरतने को कहा जा रहा है कि अगर जैसे ही अगर कोई एक्शन लेने को कहा गया आप वो एक्शन लोगे, अगर कोई पोस्ट हटाने को कहा गया आप वो पोस्ट हटा दोगे, नहीं तो आपका सेफ हार्बर चला जाएगा। This is unacceptable and problematic. Now, this is the author's opinion. Straight away, unacceptable and problematic. इसी से हमें पता करते हैं, ऐसे ही शब्दों से हम पता करते हैं, शब्दों से हम क्या पता करते हैं कि ऑथर का टोन क्या है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड प्रॉब्लमैटिक। ऑल्सो सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 elucidates the procedure to issue take down orders which these notified amendments could bypass। तो इसमें और क्या गड़बड़ है कि सेक्शन 69A अमेंडमेंट का देखा जाए तो ये बाईपास कर सकता है ये रूल को, ठीक है, लूप होल टाइप है बेसिकली। अगर ये कर देंगे तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे ऑल्सो रन अफाउल ऑफ श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, a verdict with clear guidelines for blocking content। ओके, तो ये जो आईटी एक्ट है 2000, ये क्या दिखाता है कि the procedures to issue takedown orders which these notified amendments could bypass। तो ये टेक डाउन ऑर्डर्स को दिखाता है 69A ऑफ द आईटी एक्ट में। क्या दिखता है कि कैसे इस द प्रोसीजर टू इशू टेक डाउन ऑर्डर्स, कैसे टेक डाउन ऑर्डर्स इशू करते हैं वो दिखाता है, विच दीज नोटिफाइड अमेंडमेंट्स कुड बाईपास। तो ये जो नोटिफाइड अमेंडमेंट्स हो रहे हैं ये इनको बाईपास कर सकती है। They also run afoul Shreya Singhal versus Union of India, a verdict with clear guidelines for blocking content। तो इन्होंने यही चीज किया था, बाईपास किया था, कौन सा, ये वाले केस में, ठीक है। नाउ द ऑथर इज साइटिंग एग्जांपल्स कि कहाँ कब ऐसे हुआ था। तो इस वाले केस में ब्लॉकिंग कंटेंट के लिए बोल दिया गया था, लेकिन ये क्या किए थे, रन अफाउल किए थे, मतलब नहीं किए थे। ओके, इनको बोला गया था करने लेकिन उन्होंने नहीं माना था ये कहना। Without a right to appeal or the allowance for judicial oversight, the government cannot sit on judgment on whether any information is fake or false, as the power to do so can be misused to prevent questioning or scrutiny by media organization। तो ऑथर क्या बोल रहा है कि बिना जुडिशियल ओवरसाइट के, मतलब बिना जुडिशरी बॉडी के हेल्प के बिना ये गवर्नमेंट खुद से ये काम नहीं कर सकती है, क्योंकि ये फेल कर जाएगी जजमेंट करने में कि कौन सा फेक न्यूज है या किसको कहते हैं फॉल्स न्यूज, और या तो मिसयूज कर सकती है अपनी पावर का ताकि क्वेश्चन उन पे ना किया जाए, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन स्क्रूटनी ना हो, तो वो ये पावर यूज कर सकती है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, वी विल सेंसर इट। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम।
Takedown notices have been issued by the government for critical opinion or commentary on social media platforms, with several having to comply with them and only a few such as Twitter contesting them in courts. Okay, तो अब गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे नोटिसेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इशू किए हैं, ऐसे बहुत सारे नोटिसेस कि ये कमेंट खराब है या क्रिटिकल ओपिनियन है, ऐसे बहुत सारे नोटिसेस इशू किए हैं जिसमें बहुत लोगों ने कंप्लाई कर दिया। ओके, सबने ठीक है भाई, हटा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस ट्विटर ने क्या किया था, कंटेस्ट किया था इसको कोर्ट में, ठीक है, कि नहीं, इसको तो कोर्ट ले जाएंगे, ठीक है। बाय थ्रेटनिंग टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी, तो आप प्रॉब्लम देख रहे हो क्या है कि गवर्नमेंट को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है ये इशू को सिंगल हैंडेडली हैंडल करने के लिए। दैट इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। By threatening to remove a platform's immunity for content that is flagged by the government unit, it is clear that the union government intends to create a chilling effect on the right of speech and expression on the platform. Uh, ये जो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या बोल रहा है यहाँ पर ऑथर, एक बहुत ही अच्छी बात बोली है ऑथर ने कि अगर बाय थ्रेटनिंग टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म, अगर ऐसा करता है यूनियन गवर्नमेंट कि कोई भी प्लेटफॉर्म को बोलता है कि अगर आपने ये चीज को हटाया नहीं, जिसको भी गवर्नमेंट ने मार्क कर दिया है कि ये डेरोगेटरी है या ऑफेंसिव है, किसी भी तरह का ओपिनियन है, इसको मार्क कर दिया गवर्नमेंट ने, और प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे उसके बाद फिर धमकी देंगे कि अगर आपने नहीं हटाया ये कमेंट या ये जो भी पोस्ट है तो आपकी इम्यूनिटी चली जाएगी, ठीक है, आपका सेफ हार्बर चला जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इट इज क्लियर दैट द यूनियन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू क्रिएट चिलिंग इफेक्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट कैसा इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चिलिंग इफेक्ट एज इन अ कोल्ड इफेक्ट, मतलब बेसिकली अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द राइट्स टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे छिन जाएगा इसके वजह से, उसके वजह से बहुत ही अट्रोशियस या चिलिंग इफेक्ट आ जाएगा, कोल्ड इफेक्ट आ जाएगा इन सब चीजों पे, बेसिकली इन सब चीजों पे बहुत भयंकर गहरा प्रभाव पड़ेगा। To keep the establishment, which includes the executive government of the day, on its toes, किसी भी चीज को keeping anything on their toes is basically keeping them alert, vigilant and active, ठीक है, keeping someone on their toes. So whenever let's say I go to my in-laws place, my mother-in-law keeps me on my toes, okay, so that means she keeps me active and she keeps me always vigilant and active, okay. To keep the establishment, which includes the executive government of the day, on its toes and to speak truth to power is a non-negotiable। non-negotiable का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसपे negotiate नहीं कर सकते, okay, non-negotiable that means जो है सो है, इसके ऊपर आप डिस्कस करके आप इसको negotiable या इसको आप अच्छा नहीं कर सकते हो या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो डिस्कशन करके, okay. So this is it, okay, that's what it says। तो अगर establishments रखना है तो तो अगर establishments, गवर्नमेंट establishments को एक्टिव रखना है तो and to speak truth to power is non-negotiable and salient role of journalism in democracy। तो ये किसका काम है, गवर्नमेंट को एक्टिव रखना और उनके ऑलवेज अलर्ट रखना और विजिलेंट रखना, ये किसका काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जर्नलिस्ट का, ठीक है, सेलिएंट फीचर है, सेलिएंट रोल है जर्नलिस्ट का। इन इंडिया फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज गारंटीड through Article 19 of the Constitution, which media rights and public right to free speech derived from this article। तो आर्टिकल 19 से ही बाकी आर्टिकल्स निकला है, पब्लिक मीडिया राइट्स और पब्लिक राइट्स की आर्टिकल्स भी इसी से रिलेटेड है। ये क्या गारंटी करती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस गारंटी करती है आर्टिकल 19, और उससे आया है मीडिया राइट्स और उससे आया है पब्लिक राइट्स, ठीक है। इट स्टैंड्स टू रीजन दैट एनी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया शुड बी वन केप्ट एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब हुआ अगेन एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ इज टू कीप डिस्टेंस, बेसिकली टू ऑलवेज
बी कॉशियस ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, हमेशा अलर्ट रहना उस पर्सन की वजह से के बारे में, ठीक है, टू कीप समवन्स एंड एट आर्म्स लेंथ, इट्स टू कीप अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, टू कीप देम, थोड़े से दूरी बनाए रखना, ओके, सो इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट। गवर्नमेंट और मीडिया का रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए, विद द मीडिया हैविंग सफिशिएंट फ्रीडम, और इसमें क्या होना चाहिए, मीडिया को सफिशिएंट फ्रीडम मिलना चाहिए, द गवर्नमेंट बीइंग द arbiter of on what constitute false and fake news, and having the power to act upon platforms for publishing these will amount to draconian censorship। अगर ये करने दिया जाता है गवर्नमेंट को कि वही पब्लिश करेंगे और वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा फेक न्यूज है और कौन सा फॉल्स न्यूज है, तब ये बहुत ज्यादा पुराने के टाइम का बेसिकली ड्रकोनियन एज इन हार्श सेंसरशिप होने लगेगा, बहुत ही ज्यादा सेंसरशिप होने लगेगा, चीजों का सब चीज बैन कर दी जाएंगी, ओके। All right, so what would be the author has clearly, in many different words, given his opinion clearly, right? Stated it clearly कि मुझे क्या सही लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा है, okay? So this is unacceptable and problematic, is again the author speaking. And finally, the author has concluded it by saying having act upon publishing is draconian censorship. Okay, so इसको draconian बोल रहा है. So what would be everything is social media nowadays, Alpesh. Everything is social media. Everything that you're watching online is social media, and news travels through these places severely than. Okay, ईशांत, गुड जॉब। सिनिकल हो सकता है, ठीक है, द ऑथर इज बीइंग सिनिकल, है ना, कि ये तो सही नहीं होगा, वाह, सिनिकल, ऑलराइट, सिनिकल, very nice, it sounds cynical, absolutely correct, it is cynical, okay, so the ये कंक्लूजन को मैंने सिनिकल कर दिया, सो द टोन ऑफ दिस एडिटोरियल इज सिनिकल, ओके, सो सिनिकल, एनीवन हु इज अ सिनिकल पर्सन इज अ पर्सन हु थिंक्स कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका कुछ डेफिनेटली हिडन एजेंडा है, उसका कुछ और मकसद है, अगर ये हो जाएगा तो उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल डेफिनेटली नॉट बी नाइस, ठीक है, उसका कोई नेगेटिव इंटेंशन ही है ये करने का, ओके, सो दैट वुड बी सिनिकल, असर्बिक भी बोल सकते हैं, ऑल द नेगेटिव कॉनोटेशन, क्रिटिकल इन बाय एंड लार्ज क्रिटिकल भी हो जाएगा, तो इट कैन बी ऑल्सो द टोन ऑफ द एडिटोरियल. So that's it for today. Thank you, ladies and gentlemen, for participating in the editorial of today. I will see you again in the next class, जिसमें हम जिसमें mock analysis कर रहे हैं English का. So I will see you then, and I will see you again at 6 for special session, and then I will see you again tomorrow. So I'm going to continuously see you. All right. Ishant, your question. What is your question? Ishant, what is your question? थैंक यू राही, थैंक यू फॉर कमिंग, आज अपने सेंटेंसेस नहीं बनाए बट थैंक यू अल्पेश, आई फेल्ट सो टू। 12 बजे, उस्मा की 12 बजे। I agree with you that vocabulary is important, but without the main idea and final conclusion, these sessions are futile. Okay, it's not that the sessions will become futile. I'm explaining each and every line. I'm giving you the conclusion. I'm giving you the main idea. तो फोकस उसी पे रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आई एम नॉट गिविंग यू द मेन आइडिया एंड नॉट गिविंग यू द टोन, तो सब कुछ डिस्कस होगा स्लोली एंड इवेंचुअली, लाइक आई हैव सेड ईशांत इन प्रीवियस क्लासेस एज वेल, कि कम होता जाएगा, ठीक है, वोकैबुलरी कम होता जाएगा, एंड
कंटेंट पे हम ज्यादा फोकस करने लगेंगे. दैट विल कम सून. ओके. नो, दैट इज नॉट द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड ईशांत. ऐसा नहीं है कि उस वजह से मैंने मेन आइडिया और ये क्वेश्चन हटा दिया. मैंने ये क्वेश्चंस इसलिए हटा दिया बिकॉज क्लास के बाय द एंड ऑफ दिस सेशन बहुत लोग नहीं रहते हैं. ऑन द अदर हैंड वी आर नॉट एबल टू डिस्कस प्रॉपरली. अभी आपसे मेन आइडिया और टोन्स के क्वेश्चन पूछना would not be wise जब तक मैं करती नहीं हूँ क्लास में. So as soon as main idea and tones are done, then I will start discussing it once again. ठीक है? So don't worry about it. All of this will happen. The whole purpose of this is so that आपको editorial समझ में आ जाए, है ना? तो फुल एडिटोरियल पेज एनालिसिस, ठीक है, वो भी होगा. डोंट वरी, अभी हम अप्रैल में ही है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, सब कुछ होगा. एंड ऑन दैट नोट, और कोई क्वेश्चन? उस्मा की अभी तो, आई एम सॉरी, आई वाज आल्सो ट्राइंग टू चेंज द टाइम, लेकिन अभी तो वी हैव अवेलेबिलिटी एट दिस टाइम. आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. नो 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 प्रॉब्लम ईशांत, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ नहीं यूज करोगे तो आप कहाँ? एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू यूज द वर्ड फ्यूटाइल and correctly. Very nice. Okay. So, all right. Thank you so much, everyone. And I'm taking your advice. Whatever you want to say, this is, आप खुल के बात कर सकते हैं यहाँ पर. And I will take everything into consideration. Don't worry about it. Thank you. Have a good day. Happy learning, everyone. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye.